Assalamu alaikum students, your instructor Abdul Rafi here. Today the topic that we are going to understand and learn is going to be IAS 36 International Accounting Standards, the all the IAS we are discussing. So today we have to discuss impairment of the non-current assets. What is actually impairment? We'll do a couple of examples as well after understanding the concepts and couple of terminologies that is very important in this chapter. Okay, a lot of terminologies are very important for this IAS 36 concept. So let's get started with IAS number 36 for A2 accounting that is being tested a lot of times in the exam. So the first thing is actually, sir, what is impairment? What does this word means, impairment? So basically impairment is the evaluation of your non-current assets. Okay, आप अपने नॉन करंट एसेट्स को इवेल्यूएट करते हैं कि वेदर द वैल्यू, वेदर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वॉट एवर योर करंट नॉन करंट एसेट्स वैल्यू यू आर शोइंग, वेदर इट इज़ एक्यूरेट, इट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ओवर स्टेट तो नहीं कर दिया आपने, एंड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एज वेल. सो यू इवेल्यूएट योर नॉन करंट एसेट्स के कोई इम्पेयरमेंट लॉस तो नहीं है उसमें. इट्स बेसिकली कि व्हाट इज़ द अर्निंग एबिलिटी ऑफ योर नॉन करंट एसेट, व्हाट इज़ द earning ability of your asset. So basically you evaluate, in simple terms, in simple language, it's basically impairment is you evaluate evaluation of the non-current assets, and the hint are basically the for impairment. Okay, when does impairment arise? Impairment is basically a loss, impairment loss, impairment gain कुछ नहीं होता है students, only there is impairment loss if it is there, that I'm going to explain you now. So the first important thing is that how do you get an idea, how did the accountants or those working in the companies they know कि अब हमें नॉन करंट एसेट्स की इम्पेयरमेंट को चेक करना है, हिंट देखना है. तो देर आर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग. जो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है, इट इज़ बेसिकली कैरिड आउट व्हेन वी गेट हिंट्स एंड व्हेन वी गेट सम अनसर्टेन एंड थिंग्स सिनेरियोज. लेट्स से कि एसेट कोई इन्वॉल्व हो गया इन एन एक्सीडेंट. सो ये दिस इज़ इंटरनल इनसाइड द कंपनी कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है एसेट का या कोई इन्वॉल्व हो गया उसमें. सिमिलरली कोई हमारे पास एबनॉर्मल वेस्टेज हो रही है उससे. तो ऑल दीज थिंग्स ना कि वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज हो रही है उस एसेट के थ्रू. तो लेट्स राइट इट डाउन द पॉइंट्स. एबनॉर्मल वेस्टेज हो रही है, एसेट बीइंग इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, तो एसेट का एक्सीडेंट हो गया. सो दैट इज़ बेसिकली हिंट, इम्पेयरमेंट हिंट के एसेट की माइट बी द वैल्यू माइट बी अफेक्टेड, और उसकी जो पहले वो एफर्ट कर था, पहले जो प्रोडक्टिविटी थी वो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई है. सिमिलरली देयर कैन बी दिस थिंग दैट देयर इज़ न्यू टेक्नोलॉजी नाउ. सो ये जो एसेट है नॉन करंट एसेट वो ऑलरेडी पुराना हो चुका है, ऑब्सोलेट हो चुका है, इनएडिक्वेट हो चुका है, तो वेयर एंड टेयर रीजंस की वजह से. तो देयर इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन, सो दैट्स द प्रॉब्लम. देन इसकी वैल्यू मार्केट में डिक्लाइन हो रही है, काफ़ी वैल्यू डिक्लाइन हो गई है मार्केट में. लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर नॉट यूजिंग इट, लॉट ऑफ कंपेटिटर्स आर नॉट यूजिंग इट. और फिर ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है ये एसेट, वो डिक्रीज़ हो गया. तो जो प्रोडक्ट की डिमांड है, जो ये प्रोड्यूस करके देता है, जो ये नॉन करंट एसेट है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो गई है. तो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. सो आई राइट डाउन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अदर्स आई हैव डिस्कस वर्बली विद एवरीवन के व्हाट इज़ द हिंट ऑफ द इम्पेयरमेंट, क्या हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है. तो वी गॉट द अंडरस्टैंडिंग के व्हाट इज़ इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट इज सर बेसिकली इट्स एन इवैल्यूएशन ऑफ द नॉन करंट एसेट्स, कि आपके एसेट की अर्निंग एबिलिटी क्या है, उसमें आपने ओवर स्टेट तो नहीं करा है उसको, इट्स ट्रू एंड फेयर व्यू पे रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्यूरेट डिटेल्स हैं. हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट को भी आपने इंडिकेटर देखा हुआ है, उसको भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है. कोई और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के आपके अनएस्टिमेटेड लॉसेस ज़्यादा तो आपने नहीं रिकॉर्ड किए हुए, ओवर स्टेट तो नहीं किए हुए अपनी वैल्यूज़ को. तो दैट इज़ बेसिकली अ लम्प सम ऑफ द थिंग्स दैट व्हाई इज़ बेसिकली इम्पेयरमेंट डन एंड व्हाई इट इज़ द नेम ऑफ इम्पेयरमेंट IAS 36. ओके, so moving forward, इसके बाद we need to understand students after that couple of three terminologies that we need to understand in this. So let's do that. So basically it's going to be, one of them is basically your carrying amount. Okay, very simple understanding of this. Carrying amount is simple, basically your net book value. Okay, carrying amount is your net book value. That is basically called when you subtract your accumulated depreciation from the cost, initial cost of the asset, you get the net book value. तो net book value का जो different name है, जो synonym है, it's basically carrying amount in the international accounting standards. So instead of using net book value,
in IAS 36 International Accounting Standards you use carrying amount, which is exactly the same as net book value. कि आपकी asset की value, what is the asset value that is already mentioned in the books, that is already mentioned in your final accounts after all the depreciation of the relevant years. So what is your carrying amount net book value when you have subtracted the accumulated depreciation, all the relevant depreciation from the initial cost of the asset. So you should be very careful about your carrying amount, that is your net book value. Then you have, students, is basically there is the fair value less cost to sell. Okay, so let's write it down, that we have the fair value less cost to sell. So that is another important concept. Okay, we have fair value less cost to sell, also called, I'll write down the shorter words for that. So this is basically fair value less cost to sell. Other terminologies to understand this will be, okay, the net fair value, or you have the market price. Okay, net fair value or the market price. So the understanding of this should be clear now. Okay, what is basically, after doing all the expenditure on that, how much you can sell it in the market now. For example, we are at the end of the year and we are trying to get, okay, what is the market price for this asset, non-current asset. Abhi currently, if I go to the market and I try to dispose this asset after doing all the expenditure on that, and after the cost to sell means कि कोई relevant expenditure है, कोई relevant cost आ रही है, जो कि transport cost है, या any cost, okay, any improvisation cost है, या carrying cost है उसकी, उसको वहाँ लेके जाना asset को, या कोई भी eventually cost incur हो रही है, थोड़ा सा renovation करना उसमें, तो वो cost to sell subtract करने के बाद from the fair value, what is your fair value, net fair value or market price at which the asset can be sold now, dispose, okay, what value the company is going to get or what value the business is going to get after disposing it now. Okay, so that is fair value less cost to sell, another important terminology in this one. And the third one is basically the value in use. Okay, what is value in use? In other words, it is basically called present value as well. Okay, so what is the value in use? कि अगर एसेट की करंट वैल्यू, एसेट जो है वो बेसिकली नॉन करंट एसेट जो है वो आपको फ्यूचर प्रेजेंट कैश फ्लोज दे रहा होगा, तो जैसे हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के चैप्टर में वी हैव डिस्कस दैट कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं, तो दैट्स बेसिकली वैल्यू एंड यूज इज बेसिकली व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, कि अगर हम इस एसेट को कंटिन्यू यूज करते हैं फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, जितनी भी इसकी लाइफ है, वॉट एवर द लाइफ ऑफ द एसेट इज, स्टूडेंट्स, लेट्स से 4 years 5 years, तो जब जितना भी इस एसेट को यूज करते हैं, तो व्हाट इज द करंट प्रेजेंट वैल्यू, करंट वैल्यू, व्हाट इज द करंट वैल्यूज after doing the discounting factors, after understanding all the concepts. So what is the net present value of the asset currently, year 0 mein ya now at this today's stage, at the end of there, this is all happening at the end of there. Okay students, this is all happening at the end of there. So this is very important concepts ke value and use kya ho gaya sir, net present value, and then you have the fair value, that is less cost to sell, that is net fair value market price. And it's written here as well, you can discuss here, that value in use is basically the present value of the future cash flows. So what is the current value if we use the asset, and as a result of an asset's continued use, similarly we have to be careful, okay, this is determined based on whatever the interest rates, because आप discounting factors करेंगे उस पे ऊपर, and क्या cash flows आ रहे हैं, future cash flows क्या estimated है उससे, कि ये non current asset कितना benefit provide करेगा future में, next couple of years जितनी भी इसकी life है, क्या uncertainty है इस asset के लिए, और what are the expectation of possible variations, के इसके cash flows में क्या changes आ सकती हैं amount में या timings में. तो that is very important value. So we discuss value in use, students, and we discuss fair value less cost to sell, okay, what is those. Okay, now how do you do the impairment? Coming to that point of view, okay, what are the steps and procedures in doing the impairment? So that is very important now, and we are going to take an example, couple of numerical values to understand okay, how do we do impairment with two cases, one which will give impairment loss and one which will not give impairment loss. Okay, so the first step is basically you have to figure out, the first step will be, let's say you have to figure out the fair value, that is less cost to sell, and you have to figure out the value in use. Okay, fair value, fair value, what is the amount of the fair value, that is less cost to sell, net fair value, market price kya hai, or the value in use, what is the value in use, present value. And usually in the question, students, usually in the questions it will be given. Okay, usually in the questions it will be given. So here is the question in which we have 3 assets. I'm going to solve for 2 assets. Okay, I'm going to try to do all 3 of them assets. So it's written here an example that we are going to discuss, that an entity has 3 non
non-current assets in use as its balance sheet dividend. Details of the carrying values and the recoverable amounts are set below. So you have asset number one, the carrying amount is $30,000. The fair value is less cost to sell $10,000 and value in use is $50,000. Okay student, so आपके पास already step one is done कि sir fair value is $10,000 and value in use is $50,000. Okay, so the first thing is basically you will calculate the recoverable amount from those of two. Step number two will be, step number one we got it, that you determine the values. Recoverable amount, what is basically sir recoverable amount? So recoverable amount of students is basically the maximum economic benefit that you can get, okay, from the asset, from the non-current asset. सबसे ज़्यादा benefit आपको किस में मिल रहा है? So whatever the higher of these two is going to be your recoverable amount. Okay, always remember that whatever the higher of these two, from the higher of these two, कि अगर आपकी फेयर वैल्यू ज़्यादा हुई तो वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट होगी, या अगर आपकी नेट फेयर वैल्यू जो आपकी मार्केट प्राइस जो वैल्यू इन यूज़ है, प्रेजेंट वैल्यू है, अगर वो ज़्यादा हुई तो दैट विल बी योर रिकवरेबल अमाउंट स्टूडेंट. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर रिकवरेबल अमाउंट. द हायर ऑफ द टू इज बेसिकली टेकन एज द रिकवरेबल अमाउंट, बिकॉज रिकवरेबल अमाउंट मीन्स कि द मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट दैट यू कैन डिराइव एंड ऑब्टेन फ्रॉम द स्पेसिफिक एसेट. आप कितना मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट इससे अचीव कर सकते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी स्टूडेंट्स योर recoverable amount. Hope everyone is getting it. So what will be the recoverable amount for asset number one? The recoverable amount, let's write it here in red, that sir this is recoverable amount. That is your step number two after determining the values. So recoverable amount will be, it's going to be sir $50,000. that is my recoverable amount. Okay, so we can see that your recoverable amount is $50,000. Now step number three will be, when you got the recoverable amount, you need to compare this recoverable amount students. You compare recoverable amount with your carrying amount. Okay, जो recoverable amount होती है सर उसको हम compare करते हैं with the carrying amount. Okay, so recoverable amount you compare with the carrying amount or carrying value, better to write it as carrying amount. Okay, so now two answers will be there, two possible outcomes. Okay, outcome number one. Okay, so जब आपने compare करा, outcome number one will be that what happens is basically your carrying value, just outcome number one is this one, कि your carrying value is less than the recoverable amount. So it is what does it mean? Okay, so your carrying value, let's write it down, that sir our carrying value or carrying amount or the net book value is less than the recoverable amount. So there is basically, it means that there is no impairment loss. Okay, there is no impairment loss recoverable amount, because आपका जो asset है वो already ओवरस्टेटेड नहीं है. आपका एसेट जो है वो ओवरस्टेटेड नहीं है. आप जो मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव कर सकते हो इस एसेट से, जो आपका मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट है या दैट यू कैन ऑब्टेन, दैट यू कैन अचीव स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम अर्निंग आप कर सकते हो इससे, वो आपकी 50,000 है, रिकवरेबल अमाउंट 50,000. और आपने अपना जो एसेट है इन द नेट बुक वैल्यू, इन द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के रिकॉर्ड्स में, बुक्स में वो 30,000 मेंशन किया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि अगर कोई गेन वो नहीं रिकॉर्ड करते, पहले से जो अनएंटिसिपेटेड गेन होता है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वो होता नहीं है. तो यहाँ पर कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं होगी बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. तो अगर आपका आउटकम नंबर वन आ रहा है तो सर इट्स गोइंग टू बी देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस. दैट इज our case or asset number one. For asset number one, that sir there is no impairment loss. Okay students, hope everyone is getting it. Okay sir, there will be no impairment loss and we are going to write it down that there is no impairment loss in the income statement. कुछ भी नहीं जाएगा income statement में. एंड आपकी जो बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू होगी वो एज इट इज़ रहेगी. ओके, सो वी कैन सी दैट द कैरिंग अमाउंट इज लेस देन द रिकवरेबल अमाउंट, इट्स वैल्यू इन यूज. सो एसेट नंबर वन, द वैल्यू इन बैलेंस शीट विल रिमेन द सेम 30,000. ऑलरेडी बैलेंस शीट में अमाउंट लिखी हुई है स्टूडेंट्स, तो 30,000 ही बैलेंस शीट की अमाउंट रहेगी बिकॉज कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है. ओके, सो दैट इज़ आउटकम नंबर वन, नो इम्पेयरमेंट लॉस. के एक आउटकम ये हो सकता है कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हो. और आउटकम नंबर टू जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा कि सर कोई इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है. सो हेयर वी गो कि सर आउटकम नंबर टू विल बी दैट द कैरिंग अमाउंट वाज ग्रेटर
than the recoverable amount. What does this imply? What does this means in simple language, simple terms? कि सर हमने जो नॉन करंट एसेट की वैल्यू है बुक्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो मैक्सिमम बेनिफिट अचीव कर सकते हैं, तो ये आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा बिकॉज आपको उस एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा बिकॉज एसेट की वैल्यू नॉन करंट एसेट की वैल्यू ओवर स्टेट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस होगा बिकॉज एसेट की वैल्यू ओवर स्टेट है। तो हियर वी गो कि हम ये फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एसेट नंबर 2 के लिए यू आर गोइंग टू से दैट सर व्हाट्स हैपनिंग हियर, फॉलो इन द हाईलाइटर, कि आपके पास 12,000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, 14,000 वैल्यू इन यूज़ है। What will be the recoverable amount, students? Okay, sir, recoverable amount will be the higher of the two. As we discussed, recoverable amount is always higher of the two. Okay, या तो value present value in use high होगी या fair value, so higher of the two will be the case here. That is going to be, sir, 14,000 is basically our, let's just highlight this as well, okay, 14,000 is going to be recoverable amount and carrying amount is, sir, basically 15,000, which indicates कि आपने books में 15,000 asset की value show की हुई है और maximum benefit आप खाली 14,000 earn कर सकते हो। Getting it, students? I'll repeat the point, very important understanding, कि assets में आपने अपनी net book value जो आपने asset की value show की है 15,000 है और eventually but maximum benefit आप खाली 14,000 earn कर सकते हो। Sir, that's the issue, which means you are going to say that there will be answer impairment loss. There will be an impairment loss. And how much is the impairment loss? What is the treatment for this, sir? The treatment for the impairment loss will be, the treatment will be that you are going to find the difference between them and that is going to be your impairment loss. So it's going to be $15,000 minus $14,000. That is going to be, students, $1,000. If you look at asset number 2 as an example, so it's going to be 15,000 minus 14,000, 1,000 as your impairment loss. So we'll write down the things here, that 1,000 is impairment loss. That is going to be, sir, going to go in the income statement. Okay, it is going to go, sir, in the income statement, and then you have to reduce your value by 1,000. आपकी बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में what will be the adjustment, what will be the effect, that your asset will be shown at the value of 14,000 that is mentioned here. Okay, we can read this as well, that the carrying value is greater than the recoverable amount, as written here, carrying value is greater than recoverable amount. So which means that there's an impairment loss of $1,000, students, and then 14,000 you will bring it down from 15,000 will not be the asset value now, it will be 14,000. Okay, so hope everyone gets this and everyone understands this. I would expect you everyone to take the screenshots and do asset number 3 and understand, okay, what's going to happen for asset number 3 as well. Only two outcomes are possible, whether there will be impairment loss and whether there will be no impairment loss in this one. So hope everyone understands two examples of asset number 1 and asset number 2. The third asset is just for your testing understanding purpose. Make sure try it out and see. So there can be, in summary, to summarize this, there will be two adjustments, two treatments if there's an impairment loss. Firstly, you have to show that impairment loss in the income statement as the loss in the income statement, and then in the statement of financial position, that is the balance sheet, you will have to reduce your asset value to the recoverable amount. You have to show that the carrying amount is not now the carrying amount, it is going to be the recoverable amount. That is the maximum economic benefit that you can derive from that asset, non-current asset. We'll continue from here, students. Thank you.